Let me know if I have to start or you will be starting off. Just starting off. So we are live. Hello, everyone. Good evening. I know it's a Friday, but we wanted to make sure that we have this important conversation before you all break off for the weekend. We have Sanan D'Souza from Investors Lounge, and we wanted to talk about basically Money Man, learn about some basics of financial literacy and understand what investments are and how can we navigate the current scenario that is happening in Pakistan. So thank you so much, Sanet, for taking the time out, and over to you. Well, thank you so much, Faiza, for having us. Thank you to Women in Tech PK. Thank you to Code Girls. Extremely important topic, a topic that's very close to my heart, a topic that I think is very relevant, especially in the background and the context of the past 2.5 months, where we ourselves have received, over 100 calls, lots of messages on text saying कि क्या हालात मुश्किल हैं, क्या किया जाए. So I understand everybody who's listening कि आपकी निजी जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में, इसके अलावा भी financial, economic and otherwise जब कोई मुश्किल हालात आते हैं, what helps is having firm footing, being grounded and having the right framework in place. वो कुछ भी हो, it could be spiritual, it could be your own personal literacy on things and how well read and you are and how you can apply those things. So my name is Sanan D'Souza. I am one of the co-founders of Investors Lounge. I'm glad to have an amazing team with me. And what Investors Lounge does is it is a investment training, a financial literacy training platform, which offers content in the form of courses, gamification to help you prepare you before you start off your financial journey. And we offer data, research, all of those things to keep you updated. That's the concise bit about Investors Lounge. We've been doing it for years. I am also been a trainer for many years. I've been involved with the Nest.io, with Catalyst Labs. And so this is something, even though we've been very stock market specific, the journey over the past few months has been very close to my heart because it is a topic that I feel can resonate with anyone and everyone across Pakistan, because everybody needs to, because we've not been taught in school, because we've not been taught in university, basics of doing taxes, of financial literacy, of opening accounts, of understanding your rights and responsibilities. We're often at times, we're stuck in very difficult situations without the right toolkit to solve those issues. तो वो टूलकिट होना बड़ा जरूरी है. तो मैंने कोशिश की है कि जो चीज अगर मैं आपको आज समझाए बगैर छोड़ देता, तो आपको जो महीना लगेगा उसको बहुत सारी चीजों को गैदर करने में, वो मैं आपको 30 से 40 मिनट तक डिलीवर कर सकता हूँ. So what I want you to do is, there's only a few ground rules. Take lots of notes, or take lots of pictures, screenshots, stories. Tag Women in Tech PK, I think, if I'm getting the handle correctly. Otherwise, Faiza will share it with you. And Investors Lounge on Instagram, on your pages, personal profiles. And use this. Especially take lots of notes, because I will leave you with a lot of content, जो कि फिर आप थोड़ी बहुत अपनी research भी कर सकते हैं. Just a disclaimer, I am not an investment advisor. None of this is perfect investment advice. This is just like a guide for you to start off your research. An important, essential life skill that you need to develop. Us domain mein that research should be able to help you. If this is perhaps, I think, one of the most important topics which we as Pakistani especially are not taught. And you will find that at the end of the session why this is so important. So सीखना क्या है आज? I've listed down these 4-5 चीजें जो हम कर सकते हैं, जो बहुत सारा फैला के करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा हम लोगों से. तो 5 से 6 चीजें करने की कोशिश करते हैं. एक है कि पॉजिटिव मनी माइंडसेट है क्या, जरूरी क्यों है. दूसरा ये है कि आपकी सेविंग्स जहां भी पड़ी हो, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग हैं आप लोग सुनने वाले, तो आपकी सेविंग्स को हो क्या रहा है और वो इंपॉर्टेंट क्यों है. तीसरा है, जो चाहे सोल ब्रदर्स हो या वुमेन इन टेक हो या फेमप्रो हो या कोई जो भी ग्रुप्स हैं, उसमें सबका यही सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल क्या है और हमारे लिए फिट क्या है. चौथा है स्टॉक मार्केट क्या होती है. और आखिरी है, और जो बहुत जरूरी है, कि अपनी इनकम को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है. तो ये 5-6 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम लोग आगे पीछे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, वरना we'll be only touching the surface of too many things. So I want to bring your attention to this one quote that I feel is very powerful, is कि
आप बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने कभी भी जाएंगे अपनी जिंदगी में नहीं हो पाएंगे. What you can start off doing is making small adjustments in your life, which will dramatically alter the course that your life is taking. आप जिम करने जाएं, आप अपनी फिटनेस को ले लें, अपनी हेल्थ को ले लें, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ले लें, किसी भी चीज में आप करेंगे ना, आप छोटी छोटी चीजें जरूर अपने सामने रखते हैं, क्योंकि छोटी चीजों को अचीव करना आसान होता है. And that gives you the motivation to do the next thing and even a bigger step, in an even bigger step. बहुत बड़ा लीप मारने की कोशिश करते हैं. That's generally, I wouldn't find that to be, at least in my personal life, I don't think that's really good advice that I could have followed. So why does a money mindset matter? What is a money mindset? Money mindset है क्या कि आप पैसों को लेकर सोचते किस तरीके से. If this was very interactive and we'll keep it interactive towards the end, अगर मेरे पास बहुत सारा टाइम होता, if this was an audience in an auditorium, मैं सबसे पहले सवाल ही करता कि आप पैसों से आपका रिश्ता क्या है, पैसों के बारे में आप सोचते क्या है. और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे लगता है, जिसके ऊपर मैंने भी काफी सोचा, कि एक अच्छी जिंदगी अगर मैं आपको बोलूं कि उसको पेंट करें, उसको विजुअलाइज करें, बेस्ड ऑन द मनी दैट यू हैव, व्हाट वुड इट लुक लाइक, राइट? एंड सम ऑफ द स्मार्टेस्ट आंसर्स आई हैव रिसीव्ड एंड आई हैव हर्ड ऑफ इज कि यार मुझे इस चीज की फिक्र ना करनी पड़े, या मुझे कभी इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े, या मुझे 2 दफा ये ना सोचना पड़े कि अगर खुदा ना खास्ता मेरी फैमिली में किसी को बड़ी बीमारी होती है तो मुझे कितनी शर्म आएगी XYZ चीजें करते हुए. उन चीजों को प्रिपेयर करते हुए, क्योंकि वो चीजों की प्रेपरेशन टेक्स इयर्स, दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट ऑफ अर्लियर. सेकंड इज, आर यू कमिटेड. एक तो आप पैसों के बारे में सोचते कि अगर हम डीमोनाइज करना शुरू कर दें ना, बहुत शोर होता है, एंड विच इज फाइन, आई थिंक सम दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट अगर हम पैसों को ईवल ही बोलना शुरू कर देना, देन वी विल नेवर बी एबल टू make use of the money that it was meant to make, the way it was meant to be made use of, which is कि यार the money should work for you, like वो आपको जवाब दे होना चाहिए. Then are you committed to being wealthy? आपने वाकई अभी आज कमिटमेंट की है कि हाँ, this is the end goal that I look at, यहाँ मुझे पहुंचना है, कभी मुझे ये 2 दफा नहीं सोचना पड़े कि मुझे ये गाड़ी मंगानी है या इस गाड़ी में करना है, या नुकसान, या ये बीमारी, XYZ चीजें. What is that level of comfort that you want to achieve in life, right? And then you should not be ashamed of achieving that comfort if you've done it through halal, honest, earnest ways of living and being smart about that. Like nobody should be able to put you to shame कि अरे इसके पास तो बहुत पैसा है, इसकी तो जिंदगी बहुत आसान रहेगी. If you work towards that and you put the right practices in place, it's your right, right? Financial goals के लिए बहुत जरूरी है. There is I think a speaker and an author called Simon Sinek. उसने किताब किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखी थी. It's a brilliant, powerful book and a powerful talk actually. It's knowing your why. कि आप क्यों ये करना चाहते हैं, क्यों आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, क्यों आप वेल्दी बनना चाहते हैं. ये why बहुत जरूरी है, because there will be ups and downs like everything. तो जब why आपका बड़ा strong होता है ना, तो then you find always support to carry you across. उसके लिए why आपका strong होना बहुत जरूरी होता है. And one of the more important reasons also is कि with Instagram, with Facebook, with ads, consumerism, कि मुझे ये भी खरीदना है. It's called also, I think, keeping up with the Jonases. एक syndrome है of sorts कि इसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, वरना ये मेरे बारे में क्या सोचेगा. All of that being bombarded 24 hours in a day, especially when it's it's just a touch away, a scroll away, that's too much. तो आपको पता होना चाहिए ये मेरे लिए जरूरी है. How can, there is a talk by Ramit Sethi, I think, Google Talks में, how can I afford, not think twice about the things I love and cut out the things I don't. This is a very good personal mantra to have with financial advice. इसके लिए आपके लिए एक चीज बहुत जरूरी है. Courses, podcasts, blogs, videos on money and personal finance अपना staple बना दें, right? Make sure कि आप जो commute कर रहे होते हैं, जिसमें आप podcast सुनते होंगे, बहुत अच्छी बात है. You keep your interests alive, you keep your skills alive, but consider this an essential skill कि ये तो हो ही नहीं सकता कि ये मुझे skill नहीं आता, और इसी seriousness के साथ हम आगे बढ़े. And we have a few excellent resources. We have a couple of videos. We do a lot of content on Investor Lounge. So if you follow the page, Instagram, Facebook, you'll get, if you log into the website, I will share a promo code as well with the community. Faiza will do it with you, and you can access these courses, vagera,
and you can get an in-depth look at what you need to change your financial life. So अगर मैं बेसिक सी बात करूं, 3 या 4 चीजें बात करूं कि this community who I'm speaking to, उनको क्या करना चाहिए. एक तो है you should have an emergency fund. If for example you're working somewhere, it's even more important कि emergency fund ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि right now लोग क्या कर रहे हैं, there's a very weird debate कि स्टार्टअप्स में काम नहीं करना चाहिए because you get laid off, तो क्या कर सकते हैं. I think अगर आपको बहुत अच्छा काम मिल रहा है स्टार्टअप्स में and you get that space to express yourself and you get great work, क्यों नहीं. One thing that was probably holding back is कि यार what if I'm laid off, मैं 2 महीने भी survive नहीं कर पाऊंगी, then what do I do. ऐसी चीजों के लिए इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है. 6 months of expenses to 12 months of expense, especially in times of slowdown, high inflation, recession जो यूएस में for example it's kicked in officially, तो obviously emergency fund थोड़ा बड़ा होगा. आपकी automatically stress थोड़ा कम हो जाएगा on pursuing things that are meaningful. The second thing is make it a rule कि आप, बहुत सारे मेरे दोस्तों से भी बात की है, spoken to people like you across many sessions who've given me this feedback. I said, how do you start saving? तो बोलते हैं हम लोग obviously खर्चा करते हैं, बाहर जाते हैं, हमारी चीज जो बच जाता है वो बच जाता है. ये थॉट प्रोसेस उल्टा है. होना ये चाहिए कि आपको अगर फॉर एग्जांपल आपकी 50,000 रुपए तनख्वाह है, लाख रुपए तनख्वाह या इनकम है, राइट, आपने एक परसेंटेज सेट कर दिया साइड में. नाउ यू स्टार्ट लिविंग ऑन व्हाट इज रिमेनिंग एंड दैट विल समटाइम्स कॉल यू कि आप हाथ अपना थोड़ा सा कसते हैं. समटाइम्स इट विल अलाउ यू टू एंजॉय लाइफ, बिकॉज ऑल ऑफ दिस शुड नॉट बी पुटिंग यू अंडर सो मच स्ट्रेस कि आप बोले यार फायदा क्या है, मैंने जो जिंदगी अच्छी जिंदगी गुजारनी थी वो गुजार ही नहीं रहा था मैं या रही थी मैं. Then all of this makes sense only because you have to learn कि inflation, महंगाई को beat करने के लिए you have to invest in inflation beating assets. It does not come by keeping your money under your bed, in your drawer, in a committee. Committee return नहीं, committee आपको वही पैसे आपको एक साथ लमसम अमाउंट दे देगी कुछ करने के लिए, इन्फ्लेशन बीट नहीं करेगी, रिटर्न को उसके ऊपर नहीं देगी. लोगों ने क्यों इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि उनको लगता है कि इन्वेस्टिंग बहुत डिफिकल्ट चीज है, जबकि है नहीं. एंड आई वांट ऑल द women who are listening to me to really understand what I'm going to say right now. इन्वेस्टिंग इसलिए डिफिकल्ट नहीं है और इन्वेस्टिंग इसलिए आपके लिए इतना जरूरी है करना बिकॉज women are actually better than men at managing finances and managing funds. They get better returns. Why? Men generally, अगर biology की ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, but men are infused with or granted or whatever you want to call it with testosterone, right? That means we would take more risks. We would be more jumpy with our investing. ये नहीं है. Khawateen, women take their time, research more, take lesser risks, and probably that's the way. Take lesser, actually, I would like to correct myself, undue risks. So that's a better strategy when you're looking at the long term. That's and that if it is something that is naturally inbuilt into you, use that to your advantage rather than saying कि नहीं XYZ चीजें होंगी. अगर information का मसला है, people like us are there. अगर education का मसला है, people like us are there. अगर guidance का मसला है, people like us are there. So that you never have to think about these 3 things. You have to say, okay, I can manage money, funds better than anybody because I have a natural advantage. Why am I not using the natural advantage? Generally, अगर आप 20 साल पहले 2000 में लाख रुपए रखते एक सेविंग्स अकाउंट में, लोग ज्यादातर क्या करते हैं सेविंग्स अकाउंट में रख लेते हैं, right? Let's keep the debate for interest aside, right? You can have your beliefs about interest. We won't get into it. There are options that allow you to forgo that as well. कि interest जरूरी नहीं है, but अगर मैं बोलूं कि लोग अपनी सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, सेविंग्स अकाउंट में पिछले 20 साल में 2000 से 2020, not actually based last 20 years, में 4.4-4.5% रिटर्न मिला. आप लाख रुपए रखवाते, आज 2020 में वो 2.32 होते और आप बोलते परफेक्ट, राइट? 2,30,000 2,32,000 बन गए. आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी. 1,32,000 रुपए बने. बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है. इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऑन एवरेज आई थिंक इन्फ्लेशन वुड बी अबाउट 8%, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो जो आप लूज कर रहे हैं एवरी ईयर इज 3.63%, समथिंग क्लोज टू दैट, राइट? तो जब आप 2000 में रख के 2020 में पैसा निकालते,
बज़ाहिर आपको लगता तो ये कि 2,32,000 रुपए बने, लेकिन एक्चुअली वो वैल्यू के हिसाब से इन्फ्लेशन अगर मैं उसमें से निकाल दूं कि वो आप चीजें खरीद उतने कितनी सकते हैं, तो वो होते 44,521. So you would have lost 55% even though you put your money in a savings account which generates interest. So this is not an inflation beating asset as such. क्योंकि ये इन्फ्लेशन के रेट से थोड़ा कम ही चल रहा होता है. So then how you have to think about it. One of the ways is, and which we specialize in, is we do the training part, we don't do the execution part. हमसे कोई trade नहीं कर सकता, but we have partners. I'll discuss that later on. What you can do is you can think about the stock market, right? And लोग बहुत घबरा जाते हैं. It's eventually at the end of the day is कि मैं हिस्सेदार और I am part owner of a particular business जिसके shares, जिसके हिस्से public के पास मौजूद है, मैं उनसे खरीद सकता हूँ, right? At a pre-decided date. That's what the stock market is if somebody doesn't know. अब उसको बहुत हवा बनाना बहुत मुश्किल है वगैरह है. There are technicalities if you get into it, but generally थीम इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि कंपनीज कौन सी हैं जो लिस्टेड है, राइट? इनमें से कौन सी कंपनी जो आपने नहीं सुनी हो, राइट? आई थिंक आई पुट देम ऑन अ स्लाइड बिकॉज देयर ऑल लिस्टेड, राइट? इन सबके शेयर्स मौजूद है. आई एम नॉट सेइंग इन सबके शेयर्स खरीद लो. दैट्स योर ओन रिसर्च टू बी डन. एनालिस्ट कॉल्स हैं, हमारे पास रिकमेंडेशंस है, रिसर्च हमारे पास मौजूद है इन्वेस्टर लाउंज में. प्लीज डू गो अहेड एंड यूज इट एंड थॉरली टेस्ट इट फॉर योर ओन इन्वेस्टिंग स्टाइल. बट इसमें से कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो आप नहीं कर सकते? क्या आपको पता है केई का फ्यूचर कैसा? क्या आपको पता है मीजान बैंक अच्छा है या नहीं? नहीं पता. क्या आपको नहीं पता कि लकी सीमेंट क्या करता है, किन चीजों में है? क्या वो गाड़ियां बनाता है, सीमेंट बनाता है? वो ग्रुप क्या करता है? क्या आपको लगता है कि नेस्ले अगले साल बंद हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि एचबीएल कोई छोटा बैंक है या उस बैंक की ग्रोथ में कोई मसला है? इन सारी चीजों को जब आप सोचते हैं और देखते हैं, आप बोलते हैं इतना मुश्किल नहीं है. पेल, राइट? पाक इलेक्ट्रॉन, पेल के जो आपके फ्रिज और फ्रीजर और ये सारी चीजें पड़ी होती है, क्या आपको लगता है कि कोई गर्मियां कम पड़ जाएंगी? तो ये ब्रॉड बेस्ड थीम तो आप वहां से स्टार्टिंग पॉइंट तो है क्या, मेक सेंस, देन यू हैव टू गेट इनटू द टेक्निकल्स. अच्छा, इज इट एट द राइट प्राइस? डज द कंपनीज फ्यूचर लुक गुड? ऑल ऑफ दोस थिंग्स. दिस इज व्हाई वी डेवलप्ड इन्वेस्टर्स लाउंज, where we believe Pakistan will learn how to invest, right? Along with stock markets, we want to do other things as well, financial literacy in general, but this is what we did. So we have a course on money mindset. It's a very detailed, very nice course. It's about 2 hours, right? 6 minute, 10 minute के videos होंगे, 2-3. If you set 20 minutes a day or 30 minutes a day, I think 3 दिन में आप लोग एक course निपटा दें, right? We have a course on stock investing 101. We have 3 more courses coming on next month. So you have all the content, and those courses के साथ, these are not normal courses. These are courses that are done with an instructional mindset, with assignments, with worksheets, with all of the data around it, and with on a board that deconstructs all of these things, right? So it's being done in the most professional manner possible in Pakistan. This has not been done before. At least that is my personal belief, and I'd love to be challenged on this. There are simulations. So I would love के Code Girls, Women in Tech, ये हम इनके साथ मिलके आप लोगों के लिए कुछ कॉम्पिटिशंस या चैलेंजेस भी रखें, बिकॉज यू हैव टू पुट योर थियरी टू टेस्ट. आप खेल के देखें, और हमारा मकसद ये है, थ्रू प्ले, थ्रू कॉम्पिटिशन, थ्रू इंसेंटिवाइजिंग, थ्रू कैश प्राइजेस, इंटर्नशिप्स, व्हाटएवर, आप ये करके देखिए कि आप में से बेस्ट इन्वेस्टर कौन है, टॉप 10. दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि अच्छा ये इसके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स ऐसी होगी, एंड यू विल बी जब आप अप्लाई करेंगे, you won't forget those concepts. This is how we should have been taught everything, but let's start from finance, I guess. And we have partners like FinPocket, we have Topline Securities, we have Ismail Iqbal. आप देखेंगे इन्वेस्ट लाउंज पे जाएंगे तो इन्वेस्ट के सेक्शन में ये सारे पार्टनर्स होंगे. वो करते क्या है कि आप उनके साथ इन्वेस्ट करना अगर स्टार्ट हो जाएंगे, आपका इन्वेस्टर लाउंज का एक वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देते हैं. दिल पे और फॉर योर इन्वेस्टर लाउंज सब्सक्रिप्शन, एंड दीज आर पीपल हु, so for FinPocket for example is an app, right? आप उसमें इन्वेस्ट नाउ यूज करेंगे, आपको मिल जाएंगे, आपको फ्री शेयर्स भी मिल जाएंगे. These are partners that we have because we don't do trade execution. हमारे पास से आप ट्रेड नहीं कर सकते, हमारे पास से आप सीख सकते हो, आप डेटा देख सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो. These are our execution partners of sorts के ये जो हैं आपके सब्सक्रिप्शन भी फंड कर सकते हैं, and you can use their apps to then trade because we are not brokers. स्टॉक मार्केट हो गई, अब एक बाइक लेके चलते हैं. दूसरा क्या है, सबसे इजी क्या है कि अगर मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, अगर मुझे बहुत डिटेल में हर रोज मार्केट स्क्रीन नहीं खोलनी, व्हाट कैन आई डू दैट गिव्स मी द सेम काइंड ऑफ बेनिफिट
but allows me to have a much less deep learning path. That's mutual funds. Mutual funds क्या करता है कि सेम चीज करेगा वो, बहुत सारी किस्म के म्यूचुअल फंड्स आर, एक्सप्लेन इट. 20 पहले तो आप समझ लें कि कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड ऑफर करती हैं, और 340 के करीब प्लस म्यूचुअल फंड्स हैं. जो आपको याद रखनी है वो ये 5-6 चीजें. बहुत इकसाम है म्यूचुअल फंड्स की, बहुत टाइप्स हैं. देयर इज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, व्हिच मींस फंड्स दैट इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. फंड्स क्या करते हैं, एक फंड मैनेजर होता है, वो सबके पैसे इकट्ठे किए और समझ लें सबको यूनिट्स दे दिए डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी दे गिवन. अब वो यूनिट की प्राइस बढ़ती है तो पैसा बनता है, यूनिट गिरती है तो लॉस होता है, राइट. बट दैट्स समबडी एल्स डूइंग इट फॉर यू. उसको आप डिक्टेशन नहीं दे सकते कि सर आप ये क्यों नहीं करता, वो कॉल नहीं उठाएगा. दैट्स अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर जिसने एक मैंडेट सेट किया हुआ है, जिसने सारी चीजें क्लियर कर दी कि हम इसमें इन्वेस्ट करें, आपको क्या करना है, आपको इस फंड का हिस्सा बनना है. That's the high level explanation for this. Then there's money market funds, जो कि कमर्शियल पेपर में कर सकते हैं, जो कि टर्म डिपॉजिट्स में करते हैं, जो चीजें आप अलग अलग जाके बैंक्स में या बॉन्ड्स में वगैरह आप खुद मेहनत करेंगे, वो मनी मार्केट फंड ऑलरेडी खुद कर सकता है. there's income fund, there's capital protected fund, there's even a gold fund in Pakistan. कि आपको गोल्ड में नहीं करना तो आई थिंक गोल्ड का भी कोई फंड है. एंड टोटल में 340 से ऊपर फंड. आपको याद क्या रखनी है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना, राइट. आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, आपके लिए कितना रिस्क फिट है, ये जरूरी है टू डिसाइड कि मैं स्टॉक मार्केट में डालूं, मनी मार्केट में डालूं, इनकम में डालूं, बैलेंस में डालूं, ये सारी चीजें. कितना हिस्सा स्टॉक मार्केट में डालूं, कितना हिस्सा मनी मार्केट में डालूं, ऑल ऑफ दिस इज डिपेंडिंग ऑन योर एज, योर रिस्क एपेटाइट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एंड योर टाइम होराइजन. कितने साल के लिए डालना है, कितने साल के लिए मैं हाथ नहीं लगाना चाहूंगी. देन देयर एसेट क्वालिटी, वो फंड के अंदर जो कंपनीज हैं वो कैसी हैं. क्या वो कंपनी सुनी जिन पे ज्यादा सट्टा चल रहा था, वो कंपनी सुनी है जो इतना मजे की तगड़ी कंपनी थी. फिर फंड कॉम्पोजिशन कैसा है, राइट. डज इट हैव द राइट मिक्स दैट यू वांट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. प्रोफाइल ऑफ द कंपनी क्या है, राइट. जो कंपनी, जिनको हम एएमसीज कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनीज कहेंगे, जो ये ऑफर करते हैं डिफरेंट फंड्स, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे कितना बड़ा बैंक है, उसके पीछे कितना बड़ा ग्रुप है, वो जनरली उसकी रेपुटेशन क्या है, एंड फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस और रेपुटेशन क्या है. तो ये फंड्स जो हैं, इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको मुफाप पे मिल जाएगी, विच इज द म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान. आपको इमलाक फाइनेंशियल्स के अंदर खरीदने की भी आई थिंक गुंजाइश है, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि एक वेबसाइट है रन एंड डेवलप्ड एंड रन बाय द सीडीसी, विच इज सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत अहम किरदार अदा करती है. वी विल ट्राई होपफुली इन इन्वेस्टर लाउंज एज वेल, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको म्यूचुअल फंड का डेटा भी मिल जाए, ताकि आपको ये वेबसाइट छोड़ के ना जानी पड़ी, आप जितनी फाइनेंशियल डेटा की नीड्स है उसमें मीट हो जाए. ठीक है, स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया. अब आ जाते हैं एवरीबडीज फेवरेट, एवरी मदर्स फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, आई थिंक, विच इज गोल्ड. ठीक है, कि सोने में कर लें, बेस्ट होता है, हमेशा ऊपर जाता है वगैरह. which I think if you read about gold, आप किसी बातों पे नहीं जा, you definitely read up upon gold, कि जब चढ़ता है तो चढ़ता क्यों है, जब बढ़ता है तो बढ़ता क्यों है, गिरता है तो गिरता क्यों है, राइट. क्या डिमांड ऑफ ज्वेलरी है, इट्स यूज्ड इन B2B एप्लीकेशंस, why is it used as a hedge against inflation during current, all of those things make a difference, right. बट ये जो सोच है ना कि हमेशा ही बढ़ेगा, ये आई एम नॉट टू श्योर के सही है. ये जो क्लिपिंग है, ये क्लिपिंग आई थिंक 20 से 25 दिन पुरानी है, जिसमें 1,43,000 रुपए पर तोला था गोल्ड. आई थिंक 28 जुलाई को 1,49,000 है, एंड सीम्स लाइक अप्रिशिएबल. लेकिन ये है गोल्ड केस, राइट. अगर आप 2013 से 2016 तक देखें तो आपको लगेगा ये गोल्ड तो नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्ड नीचे आया, मोस्टली ट्रेंड जो है उसका नीचे की तरफ आया. अब थिंकिंग डिफरेंट हो जाती है. अब जिसने 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट करनी थी गोल्ड में, वो रोएगा, वो बोलेगा क्यों, या रोएगी, बोलेगा क्यों भाई, पैसे तो गए. So you have to think about this. Yes, you always have to take all of these things with a portfolio mindset. यार, how do I create a bucket, a cart, like e-commerce में होता है ना, for myself, which is tailor made for me. कितना गोल्ड होना चाहिए, कितना मे बी सिल्वर होना चाहिए, कितना मार्केट में लगाना चाहिए, कितना फिक्स इनकम में लगाना चाहिए, उसमें शरिया कंप्लायंस का अगर ऑप्शन है तो शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स क्या हैं, और कितना मेरे पास कैश होना चाहिए. दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट यू क्रिएट. ऐसी इनमें से कोई भी एक चीज आपको वेल्दी नहीं बनाएगी. एंड बाय वेल्दी आई मीन, एक तो फाइनेंशियली वेल्दी होता है, बट द वेल्दी wealth perspective that I want to share with you guys that we should have is
have more time in your life to do the things that you love. And that can only be possible if you're not struggling every time for the next possible penny. फिर आता है very interesting thing called national savings. कौमी बचत भी I think इसको कहते हैं. That's the government taking money from you guys, offering you guys returns. वो होते क्या? So these are the things that you need to know about. National savings जो है ना, आप बहुत जगहों पे आप ऑफिस देखेंगे. बहुत सारे लोगों ने बोला यार ऑफिस करता क्या? तो मैंने बोला यार ये समझा तो दूं लोगों को कि सब करता क्या. तो NSS जो है नेशनल सेविंग स्कीम्स, वो अब बहुत मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स हैं जो आप खरीद सकते हैं जो कि गवर्नमेंट को पैसा देते हैं. उसमें रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, बहबूद इनकम सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है. बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल करता क्या है? इट वाज डेवलप्ड फॉर आई थिंक विडोज, देन पीपल आफ्टर 60, जो कि अब and it offers a pretty decent return. So withholding tax भी I think कटती नहीं है, zakat भी I think exempted है. All of those things. So these are products that are available to the public. The public just doesn't know about. Defense saving certificates, especially इनके आप returns जाके देखें. आप कहाँ से check कर सकते हैं? Point number 5 पे अगर आप जाएं, savings.gov.pk. So stock market के लिए, if I have to give you a website, it will be Investors Lounge. Mutual funds के लिए, hopefully it will be Investors Lounge, but right now I think IMLAC would have to do. Mawazna is another website. I think IMLAC होगा और MUFAP होगा, Mutual Fund Association of Pakistan. नेशनल सेविंग्स के लिए, गोल्ड के लिए तो आपको नॉर्मली कहीं हमारी वेब वगैरह पे कहीं से भी मिल जाएगा. एंड नेशनल सेविंग्स के लिए यू विल गेट इट एट savings.gov.pk. हाँ है एक्चुअली गवर्नमेंट का इदारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है. आप जाएंगे, थोड़ा सा गवर्नमेंट वाला सेटअप है वहाँ. बट अगर आई नो सो मेनी फैमिलीज, स्पेशली एल्डर पीपल, जिनका पूरा घर इससे चलता है, एंड देर ओके, देर नाउ फाइनेंशियली सेट. पैसा डाला, बिकॉज राइट नाउ फॉर एग्जांपल बहबूद है, बहबूद पे 12.36% रिटर्न होना चाहिए, राइट. आप जिसके पास करोड़ रुपए की सेविंग्स टेक्निकली 60-70 साल के उसमें आ गई, अपार्ट फ्रॉम देयर अपार्टमेंट वगैरह, उसको 12.5 लाख फॉर एग्जांपल अगर साल के एक तरीके से मिल रहे हैं, लाख रुपए का उसका घर है, वो चल रहा है. इसी तरीके से 2 करोड़ रुपए होगा या जो भी होगा, 50 लाख की आई थिंक लिमिट होती है पर पर्सन, if I'm not mistaken, but you can always go and check. इसमें आपको चीजें क्या याद रखनी है? बहबूद है, रेगुलर सेविंग, स्पेशल सेविंग सेट है, ऐसे ये तो 5-6 मैंने लिखे होंगे, लेकिन 7-8-9 हैं. एंड अर्ली पेनल्टी चार्जेस क्या है विदड्रॉ के? क्योंकि होता है कि 1 साल रखें, 2 साल रखें, 3 साल रखें, जल्दी विदड्रॉ करते हैं तो 1-2% कटते हैं. विथहोल्डिंग टैक्स कितनी लगती है? मैच्योरिटी पीरियड कितना है जिसमें आपको सारा पैसा वापस मिल जाता है? यू कैन फाइंड दिस ऑल इन अ टैब कॉल्ड प्रोडक्ट समरी. एक चार्ट बना हुआ है, इट्स एट savings.gov.pk. I hope that kind of covers it. फिर आता है actually everybody is either fantasy or poster child. वो ये है कि real estate. ठीक है, real estate में we'll have to be very honest with ourselves. आपके पास, मेरे पास बहुत पैसा, why not? Right? Real estate plot. I would have to not completely agree with the philosophy of investing in real estate because it's an unproductive asset, I think. But at the end of the day, वो return आपको देता है. और देता है, आ रहा है. बट द पॉइंट इज कि वो हर किसी के बस की बात नहीं. आप, और वो एक्सक्लूड करता है द फेलियर दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट, जहां लोगों को चूना भी लग चुका है, उनके पेपर्स भी नकली निकले हैं, उनको पोजेशन नहीं मिली, राइट. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, हमें आदत ये है कि अगर बैरियर टाउन की आवाज लगी तो 2 साल तक तो बैरियर टाउन हर किसी का जो है ना, लोग अपने बच्चे भूल जाएंगे और बैरियर टाउन याद रखेंगे. I'm not too sure if that's a smart decision to make. Real estate में भी there are things that you have to keep in mind. Development कितनी है, urban development कितनी है उसके around, profile कैसा है group का, many things, right? And तब भी आपके साथ मसला हो सकता है. But this is always something, if you have a lot of capital, this is something that you have to think of. और real estate में अभी आपको entry मिलेगी, वो ऐसे नहीं मिलेगी कि बना बनाया हर चीज है आपको मिल. आप ज्यादातर जाके देखेंगे वो open barren जगहें होंगी, that you will then give you an entry point. But those come with their own risks, right? उनके मसले, cases, 1000 चीजें. Hopefully we'll also create in the coming months a course on real estate, because वो हुआ नहीं है, and लोगों को पता होना चाहिए. क्योंकि फिर जब लोगों को डसा जाता है, तो फिर that is too late and too much money to have lost. And then there is every person's fantasy till at least 6 months ago, which was cryptocurrencies. I don't have too much of an opinion on it because I'm not too well read on it. I just know the volatility in cryptocurrencies and the fact that the nature of the projects are not very clear.
for everybody makes it very risky. It's 24 घंटे की I think market है. You always have to balance के यार ये मेरी जिंदगी का मेरे दिन का कितना हिस्सा खा रही है, and उस हिसाब से मैं कर भी देखो अभी से लूना था I think right 98% of its value it lost. आप सोचे आपने 10 लाख रुपए डाल आपने करोड़ रुपए किसी ने करोड़ रुपए डाले हो और सुबह वो उठे वो सिर्फ सोया या सोई है वो सुबह उठे 6 घंटे की नींद किसी ने की और सुबह उठी और उसने बोला ये तो करोड़ रुपए कितने 2 लाख रुपए बचे. स्टॉक मार्केट वगैरह में देयर आर सर्किट ब्रेकर्स अपर सर्किट लोअर सर्किट बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर भी होंगी जैसे ऑब्वियसली स्टॉप लॉस वगैरह होंगे बट टू वॉलेटाइल राइट. टेक योर रिस्क इफ यू वांट परफेक्ट. क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा आई वुड रियली what I'd advise you to do is कि जो इसकी underlying technologies हैं whether it's bitcoins, blockchain, all of these things इसके ऊपर अपनी नजर और अपनी reading तो definitely रखें. But don't be fascinated by every project that's coming up. If you have money to burn, if you have money that you don't mind losing, if you are off the gambling mindset, then that's up to you. I know you could be better than me. You could have a return that's a lot more than me. But my return, my calculus, my framework matters to me. And what everybody else does, I don't think too much into it. किसी ने एंग्रो कॉर्प में अगर मुझसे 30% ज्यादा बना लिया, that's not a problem for me. मुझे मेरा रिटर्न मिला है and I left at the right time. For me, ये बहुत जरूरी है. Last, when I started my journey on thinking about कि लोगों को बताया जाए कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, सेविंग, इन्वेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा ये फीडबैक मिला कि सर हम इन्वेस्ट तभी कर सकते हैं हमारे पास कुछ पैसे बचे. बहुत दफा उसका सोल्यूशन यही होता है कि यू विल नीड एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम. All of these investments are extra sources, but propping up your income, especially in times of high inflation, zaruri hai. I'm speaking to the wrong audience because you're a lot more literate than me on these things. But freelancing, online tutoring, job boards, all of these are available. You know all of these things. I've just put them across. So if you've missed a name, you can probably note it down and research it. But invest in your personal brand. Over LinkedIn, over Twitter, आपने अपना personal domain identify करना है, नहीं भी करें कोई मसला नहीं है. Put something, think of things that are useful, not sensational, not playing to the audience or choir, right? Put something out there that is useful to people and you will build a brand. And that is one of the best, actually that is the best investment you can make across any of these asset classes, because this will allow you to earn more income, to find more connections, to find better advice, to do all of these things, to start up something. All of these things require good, well-established, well-maintained, well-oiled connections, genuine connections, well-meaning connections, meaningful connections actually. Not कि यार मैंने थोड़ा सा कर लिया उसके बाद बैठ गया, time ज़ाया कर दिया. All of these things come across. Like one of my personal favorites is a person, I think pretty much everybody's heard of her, called Jahan Ara. When you sit across her, it feels there is a genuine feeling she's listening. I have a very astute ability to understand if somebody's not listening and they're just waiting to speak. That person listens. If that person listens, that person offers advice, that person takes advice. So she's a good role model to also have in this particular connection. And that is one of the reasons why she's built this large network. Ye bada zaruri. And she can call upon this large network if she wants to start off something. And that's what's paid off. And that's what helped Pakistan and the ecosystem. And that's a very good example to have in your own personal careers. That, I think, is as much as I have for you today. I think it's been about a 40-minute session. That's what I planned. So I hope this has been educational. Go out, do your research, educate yourselves, build your personal brand. And please take financial literacy, financial planning, financial sensibility to be an essential life skill. And take it absolutely as seriously as you would your job. Or actually more than that. Because it's going to, if anything is going to pay off in the future, the right moves made at the right time, during this time, these are going to pay off and you're going to thank yourself. So go ahead and hopefully it's been useful and happy investing. If you have any questions, my email address is there, my number is here. I'm on, Senin D'Souza is the same I use for Twitter as well as Instagram. So yeah,
hopefully you've taken a lot of notes. Hopefully this has been very useful. Thank you so much. Thank you so much, Sanan. I am seeing people watching, and I'm also getting a lot of inbox messages about questions, because I think a lot of people do not feel comfortable when it comes to asking for financial advice on a public platform. So just a few questions. One question is about cryptocurrency. So Tanveel is asking that, do you plan to have a course on crypto investments anytime? Is that something you guys are looking for? So I'll answer this question. We would love to, but I'll give you the lowdown on what's happening on the regulatory front. I don't think the State Bank, the SECP are too, hung on in terms of allowing people to, invest in cryptos. It's too volatile. They consider कि information लोगों ने बहुत ज़्यादा डालना शुरू कर दिए. When things were good, things were good. When things were bad, they were hell. So the regulator, in their personal, research and insight, they took and they said कि नहीं यार इसको थोड़ा सा जो है ना grey area में अभी फिलहाल रखना पड़ेगा, I think. So I don't think cryptocurrencies generally on the regulatory front is something that is a little right now frowned upon. I think it will make its way. It will make its place. If we get the go ahead, theek hai, I think Awam is educated. You've done your part. Your plan seems good. Agar people stick to this plan, people invest intelligently into cryptos and they know all of the things, then you can go ahead and do this. Your plan is solid. We don't have an issue. Yes, we will do it. Absolutely. Because cryptos के अलावा what I would suggest is कि वो जो underlying technologies हैं उसके बारे में तो वैसे भी पढ़. Of course, absolutely. Because so blockchain is way more than just cryptocurrencies. So the technology is solid. There is no doubt about that. So someone is asking about NFTs and metaverse. I think Tanveel is asking about that. Do you have any, comment on that? So again, similar, I treat these things that are newly started, that have not seen a 10, 20-year cycle, that have not seen enough of the limelight or of the exposure in terms of regulatory sort of back and forth. I find these to be right now similar to cryptocurrencies in the sense, I'm not very well versed on these, but right now my focus would be सीखें NFTs क्या है, सीखें metaverse क्या है, समझें वो क्या है to the first principles. तो फिर आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा इसकी application क्या हो सकती है. Maybe more than just a digital asset, maybe something clicks in you and says कि यार इसके ऊपर venture खड़ा किया जा सकता है, इसके ऊपर advertising कैसे की जा सकती है, इसके ऊपर मैं अपने job के ऊपर meaningful results कैसे ला सकती हूँ. Those things are very useful. But before placing your money into something that you do not fully understand, agar Warren Buffett या Warren Buffett, however you want to pronounce that name, इतना बड़ा इन्वेस्टर होने के बावजूद ये बोलता है कि जो मुझे समझ में नहीं आता उसमें मुझे पैसे डालने में जो है ना मौत आती है, तो हम तो एक्सपीरियंस में, तजुर्बे में काफी छोटे हैं. तो आई थिंक दैट्स अ गुड प्रिंसिपल टू फॉलो. जो बिल्कुल चीज, तो पहले तो आप समझें, बेसिक समझें, कोर्सेज करें, which is why we'll keep on adding courses, keep on following them, do them till the end, have conversation. हर चीज को समझने का तरीका एक बहुत अच्छा होता है. Consume that content, then have a discussion with other people. You will get back and forth and more questions and keep your mind open and say, okay. Economy को हम लोग में से 10 में से 9 लोग नहीं समझ सकते. मुझे अभी तक इतनी बड़ी जर्नी है, but all I'm saying is कि go for solid assets, go for right financial products, because I don't want to sound negative, but you probably understand things are bad, but there's every chance that things might get worse. Which is why we don't limit ourselves to कि यार mutual fund में पैसे डाल दो. My team wants to do content on बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं, right? पेट्रोल का बिल कैसे कम कर सकते हैं. We have these partnerships where we are trying to come up with a content कि यार ये भी तो जरूरी है लोगों के लिए. $250 हो गया है, पेट्रोल ऊपर चढ़ रहा है, गैस अलग बढ़ रही है, बिजली अलग बढ़ रही है. मैं आपके सामने आके बोल रहा हूँ आप स्टॉक मार्केट में कैसे क्यों नहीं डालते. ये डिसइनजेन्युअस हो जाएगा मेरी तरफ से. All of this requires financial
your life to be re-engineered. तो उसके अंदर जो है ना, that I think is my job to educate. That is your job to follow through and choose the best fit for yourself. Absolutely. Understood. Definitely. Because again, even though I belong to tech and I have experience with a bit about with blockchain products, when it comes to putting money in crypto, I did not do that because again, my Maven background told me that it's a bad idea for now. Yeah, again. So another question is from someone. She wants to know that how much should we save from our income? Is there a formula for that? I think one of the rules that's followed generally is 50-30-20. But again, this is all I can. There is no rule as such. Experiment and see what works for you. Because what I feel is कि हर किसी के घर के हालात, composition of their families, the kind of education they want to give their children, the number of children, what their distance is from their workplace and other things. All of these, what kind of debts they have, right? हम generally debt के बारे में बात नहीं करते. आप US financial literacy का कोई भी कोर्स उठाएंगे ना, वो 90% debt के ऊपर होगा. Luckily, जैसे भी आप कह लें, पाकिस्तान is not, हर घर में इतनी ज्यादा उधार या कर्जे में इतना प्रॉब्लम नहीं है हमें ऑन एन इंडिविजुअल लेवल. बट हो सकता है यार किसी का हो. बीमारियां अलग चीज हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स देन अलाउ यू, आई थिंक, टू मेक a judicious move or a formula that best fits you. I would say 50%, right? And I think try with 50%. Try with 60%, right? And see how much आप हाथ पक्का, आप हाथ पीछे कितना खींच सकते हैं, राइट? और अगर आप हो जाए, इमेजिन सेविंग 60% अ मंथ. जिस वक्त आप अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो मेनी ऑफ अस आर डूइंग मंथ ऑन मंथ, पेचेक बाय पेचेक. इमेजिन 30%. मैंने बोला नहीं यार, अब मुझे अगर कारपूल करना पड़ा, मुझे करना पड़ेगा. अब मुझे अगर 2 दफा नहीं खाना, या फलां की बर्थडे में अगर मैं 8 बर्थडे में जा रही हूं तो मुझे 2 में जाना है जो वाकई मैटर करती है. अदरवाइज आई विल सेंड माय वेल विशेस. ये थिंकिंग जब तक नहीं आएगी ना, नहीं होगा. एंड आई एम a learner like you. I am trying to make these decisions simultaneously as you will after the session. Yeah, absolutely. So another question is around self-employment. So there are people like myself also. So I have a job, but I'm also self-employed. So what options do we have for self-employed people when it comes to planning for their retirements? Is there anything available here in Pakistan that we can explore? So I think if by that question this the person who asked means क्या अभी entrepreneurship में या as a second side hustle क्या चीजें मौजूद हैं, तो I think there is nobody better to answer even offline the question than Faiza herself and her team. All of these people, all of these communities, all of these organizations that are looking to arrange for facilities, for resources, for trainings that are upskilling you, allow you to have a diverse source of income, right? Freelancing, online tutoring, there's so much. हर चीज को जरूरी तो नहीं है ना कि VC funded startup हो, right? And that's a struggle in itself. That's done for different purposes. I hope, like we learned when we were growing up and we learned it the hard way. जरूरी नहीं है. What if you had a very good services business जिसके high margins हो? Why can't you develop the best kind of apps? Why can't you develop the best kind of content? Why can't you be one of the better SEO specialists, digital marketing specialists? All of these are available. और उनकी supply है. I understand इनकी supply है. But content और platforms ही बहुत बड़े हैं. People who understand it to first principles, जो लोगों को चेपियां नहीं लगाते ना, वो लोग बहुत कम हैं. Be one of those people जो लोगों को चेपियां नहीं लगाएं, who takes problems and uses their expertise to solve those problems genuinely, effectively, cost effectively. And so you will build relationships and you'll build a scalable business, I think, across that. And that's one of the best things you can do to yourself. Right. बिल्कुल ठीक है. Absolutely agreed. So, Sanem, when should someone start thinking about their retirement?
I think as early as possible. एक प्रॉब्लम आती है. I'll be very honest. I'll share this with you. अगर मैं आज आपको कहूं कि do you want to buy something that cures, sorry for bringing this annoying problem up, something that cures acne, something that improves complexion, something that improves dark circles, or something that is anti-aging. I guarantee you 9 out of 10 people will choose the top 3, will not choose anti-aging. Because we defer that. As a thought, we defer that. बुढ़ापा आया नहीं है ना, सामने भी नहीं दिखता, हमें कल दिखता है, हमें आज दिखती है, हमें अगला घंटा दिखता है. ये प्रॉब्लम है और ये जनरली है थ्रू आउट द वर्ल्ड. आप नहीं सोच सकते अच्छा यार 3 बच्चे होंगे, तीनों पे बोझ ना बन जाऊं, उस वक्त पैसों के लालच लाले ना पड़े हों. ऑल ऑफ दिस थिंग्स नहीं आते, अगले दिन का आता है. वर्क, हसल, save, all of those things. So as early as possible. The reason being, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंड होगी ओवर इयर्स. ऊपर उतार होगा, चढ़ाव होगा, all of those things. Then there are different phases in your life. आप यंग होंगे, आप probably slightly riskier assets में exposure अपना ज्यादा रख सकते हैं. As you grow, as your responsibilities grow, as you slow down, probably आपकी एक वो कम होगा. Which ideally in Pakistan I don't think we follow the reverse. मैंने ज्यादातर देखा है स्टॉक मार्केट में जो है ना, पहले तो काफी एज्ड अंकल्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. But technically this is what happens in the world and in life. आप जितनी जल्दी स्टार्ट करें, जितनी जल्दी अपना पोर्टफोलियो करें. There are many things out there. There's VPS, voluntary pension scheme. Then you have to think about कि employer जिसके साथ हो. One of the things I missed out on, very important. Be a good negotiator. Negotiate with your employer. Think of the best things that you can get on the table. Be loyal, do your work well, but also make sure that the employer is also being honest and honest with you. तो अगर वहाँ gratuity है, अगर वहाँ provident fund है, अगर वहाँ different schemes हैं in place, versus some place जहाँ नहीं है और काम almost similar है, so which one will you choose? पर लोग वो चीजें सोचते नहीं, PF क्या होता है यार, 200 रुपए तो कटता है, तो ये तो थी. These will compound and EOBI, all of those things. ये सबको एक साथ लेके चलना शुरू करते हैं. ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो बड़ा मैटर. लाइफ इंश्योरेंस, आपके पेरेंट्स की इंश्योरेंस कितना मैटर करती है. आप अगर फॉर एग्जांपल टेलनॉर में काम करती हैं और मैं इन्वेस्टलॉन में काम करता हूं, मेरी छोटी टीम है, मैं पेरेंट्स की इंश्योरेंस नहीं दे सकता, टेलनॉर देती है. What do you think? Who do you think as जिसकी तरफ टैलेंट ग्रेविटेट करेगा? तो उस पेरेंट्स की एज ऐसी होती है, उनको मसले आएंगे. जब मसले आएंगे तो खर्चे बड़े होंगे. जब खर्चे बड़े होते हैं तो जो चीज कवर कर रही होती है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स को साथ लेके चलें, बट यू विल हैव टू सिट डाउन, जर्नल दीज थिंग्स. यार ये भी तो जरूरी है, ये भी तो जरूरी है. हाउ डू आई मेक दिस, हाउ डू आई, आर देयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल. आई होप एट इन्वेस्टर लाउंज हम लोग अपने फेसबुक पेज वगैरह पे विल कीप ऑन थ्रोइंग दीज थिंग्स एट यू कि यार ये भी है अवेलेबल, आप इसको भी रिसर्च करें, इसको भी देखें, इसको भी देखें. So hopefully that comes. I've answered that question, but if not, willing to take on other questions as well. Right. So we do have a lot of questions, but in favor of time, I'm just going to ask you one question. And someone has basically written her story talking about some scam investment scheme that she got into, and she's saying that are there any guidelines in terms of how do we know if it's a good investment or if it's a scam? Do you have any thoughts on that? One of the things is, and I think what really helps here is the regulator being very active. And it has, the regulators are active a lot more than when I started off my professional career. एक चीज, एक रूल ऑफ थंब टाइप तो रख लें आप. वो ये होता है कि कोई आपको बोले ना, और ये मूवीज से आई विल बोरो कि 4 दिन में पैसा डबल, 8 दिन में पैसा डबल चार्ज, जो एक केस हो चुका है. कोई भी आपको एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स दे रहा हो ना, दैट इज वन रेड फ्लैग. आई थिंक नहीं बनते, कंसिस्टेंटली नहीं बन सकते इतने रिटर्न्स. होते तो क्या ही बात होती, दुनिया ही बदल जाती. नहीं होता ऐसे. सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट. सेकंड, ऑलवेज चेक विद द रेगुलेटर. जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक स्टेट बैंक का आया था प्रेस रिलीज, नोटिफिकेशन आया था कि OctaFX एंड 1-2 अदर एप्स आर बैंड. अब OctaFX वगैरह जैसी चीजें हैं ना, लोग करना शुरू हो गए होंगे बिकॉज उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह इन्वॉल्व थे, पॉपुलर लोग इन्वॉल्व थे, who are डूइंग देयर पार्ट इन क्रिएटिंग एजुकेशन, पर वो बैन हो गया, राइट.
That's another. Then फिर आप थोड़ी अपनी रिसर्च भी करें, आगे पीछे लोगों से पूछें, उनकी वेबसाइट विजिट करें, देखें वो आया कब है. बट दिस ऑल ऑनलाइन, राइट? ऑफलाइन बहुत से लोग बोलेंगे देखो मैंने ये स्टील की पाइपों का काम किया हुआ है. Just for example, I'll mention it. I shouldn't be, but Azad Chaiwala is one of the popular YouTubers. I think his delivery is amazing. I think the way he's carrying forward his mission of education is amazing. But I might disagree with some of the things that he might suggest. कि यार आप बिच्छू के बिजनेस में पैसा डाल दें या आप रेंट कर दें सीढ़ियां. Maybe that works, yeah. I don't really know. But when something gives you like kind of a red flag कि यार ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा या ये बहुत रिस्की हो जाएगा, इसके पीछे जितना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना हो ना, दैट इज बेटर. जहां आप कच्ची चीजों के साथ, कच्चे पेपर्स के साथ, जहां लिखत पढ़त ना हो, जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में, वो चीज थोड़ी सी रिस्की वैसे ही हो जाती है. सो दीज आर जस्ट 4-5 हैक्स दैट यू कैन यूज. बाकी चूना लगाने को तो मुझे क्या पता, मैं क्रेडिट कार्ड के HBL के स्टैंड चार्टर से भी किसी को मंगवाता हूँ. लोग इतने तेज हो गए, लोग बोलते हैं हेलो मैं HBL से बात कर रहा हूँ, ये वही आपका नाम है, ये XYZ, मैं मेजर वगैरह XYZ बात कर रहा हूँ. बहुत से लोग अपना डिटेल्स देते हैं, राइट? It is extremely important for everyone in this session to not only go back and start journaling and start their journey, but to have this conversation with their kids, with their cousins, with their friends, and with their parents. Because these conversations नहीं हुई ना. This is one of the reasons why these conversations need to happen a lot more frequently, a lot more, judiciously. सोच समझ के बात की जाए, अच्छी बात की जाए, और बहुत फ्रीक्वेंटली बात की जाए उन लोगों से जिनको नुकसान पहुंच सकता है. मेरे अंकल आंटी को, मेरे फादर को आई थिंक कॉल आई थी, एंड अगर मैं उनसे फोन नहीं लेता एटलीस्ट मेरे फादर से, ये कौन बात कर रहा है, तो मुझे नहीं पता चलता कि उसका. दिस इज आई थिंक इम्पोर्टेंट. Right, absolutely. Yeah, bilkul. And this is something that we also need to talk to our parents about, because for their generation these things are new, so they won't be able to understand a lot of these things. Thank you so much, Sanan. It was wonderful. There are a lot of questions. I'm going to direct all those people to you. For Women in Tech PK and Code Girls members, we do have something special in terms of we'll make sure that they get access to the courses that Sanan has and his team has recorded. I have seen those courses. I love the recording setup. I don't know if I told you that or not. So yeah, thank you so much, and we'll reach out to you again soon, so that we can talk about a few more things. Either before you go, I just wanted to say the perfect way for you to reach out to me, I think, would be LinkedIn. So you could send me a request on LinkedIn, and I can answer your messages there. We can remain connected. That's a better way to go than an email. Instagram, generally Instagram and Facebook, I keep very personal. So I think LinkedIn is the best way, or Twitter. And yes, as Faiza said, we'll share something special, like an offer we have for your communities in special, because I really, really believe that if women take this really seriously and we see more women in this industry especially, then a lot of things will turn around for the better. So thank you so much for having me. Thank you so much for listening. Hopefully this is something useful. Yeah, absolutely. And anyone who's watching, you can go to investorslounge.com and get to know about the platform. And so we'll reach out to you again. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Bye.